हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल चेस लवर्स। आज हम लोग एक और मुकाबला देखने वाले हैं। ये गेम स्टेनिस वर्सेस ए मोंग्रेडियन के बीच में हुआ था। ये मुकाबला लंदन में 1862 में खेला गया था, जहाँ पे स्टेनिस खेल रहे वाइट के साथ में और मोंग्रेडियन खेल रहे ब्लैक के साथ में। तो देखते हैं ये मैच में क्या हुआ था। पॉन गोज टू E4, पॉन गोज टू D5, पॉन टेक्स पॉन, Queen takes pawn on D5, knight goes to C3, queen moves to D8, pawn moves to D4, pawn moves to E6, knight moves to F3, knight goes to F6, bishop goes to D3, bishop goes to E7, white castles, black castles, bishop goes to E3, pawn moves to B6, knight moves to E5, bishop moves to B7, pawn moves to F4, knight moves to D7, queen moves to E2, knight moves to D5, knight takes knight, pawn takes knight, rook F1 moves to F3, pawn moves to F5, rook moves to H3, pawn goes to G6, pawn goes to G4, pawn on F5 takes pawn on G4, rook takes pawn on H7, knight takes knight, pawn on F4 takes knight, king takes rook, queen takes pawn on G4, rook F8 moves to G8, queen goes to H5 and check, king moves to G7, queen goes to H6 and check, king moves to F7, queen moves to H7 and check, king moves to E6, queen goes to H3 and check, king moves to F7, rook on A1 moves to F1 and check, king moves to E8, queen moves to E6, rook moves to G7, bishop goes to G5, queen goes to D7, bishop takes pawn on G6 and check, rook takes bishop, queen takes rook on G6 and check, king moves to D8, rook F1 goes to F8 and check, queen goes to E8 and finally queen takes queen and check and mate। इस तरीके से ये मुकाबला स्टेनिस ने जीता था मोंग्रेडियन के खिलाफ। उम्मीद करता हूँ कि ये गेम आपको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग मुकाबले आप चेस लवर्स पे देख सकते हैं। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना ना भूलें। Thank you for watching the channel Chess Lovers।